Good morning, friends. In this video, I am covering a two-way ANOVA test. I already covered one-way ANOVA test followed by a turkey test. If you have not watched that video, please go through the video first and then come to two-way ANOVA test. So let's start. A two-way ANOVA, full form of ANOVA is analysis of variance, is a statistical test used to determine how two different categorical independent variables called factors simultaneously affect a continuous dependent variable. It does not just look at each factor individually, it also checks if there is an interaction effect between them. That is, whether the impact of one factor depends on the level of the other factor. So the core concept here is to understand a two-way ANOVA, you need to look at three distinct set of hypotheses. Factor A, main effect. Does the first independent variable have a significant effect on the outcome? Factor B, main effect. Does the second independent variable have a significant effect on the outcome? Interaction effect, that is combination of A and B. Do the two independent variables interact? Example, does the effect of factor A change depending on the level of factor B? So these are the three factors we generally consider in two-way ANOVA test. I took a scenario here. Let's say a company want to test how training method, factor A, classroom versus online, and experience level, factor B, junior versus senior, affect employee test scores dependent variable. I will show you the independent variables in couple of minutes. For a two-way ANOVA with the replication, meaning multiple data points per combination, Excel requires the data to be formatted precisely in a grid. Each row represents a level of factor A and each column represents a level of factor B. So factor A is training method, which is rows, and it is an independent uh, variable. Null hypothesis is p-value is less than equal to 0.05. That is, there is no difference in mean test scores between the classroom and online training methods. It is also represented by H naught. Alternative hypothesis is p-value is greater than 0.05, which is there is significant difference in mean test scores between the classroom and online training methods. It is also represented by HA small a or H1. Factor B, which is also an independent variable, experience level columns. Null hypothesis, again p-value less than equal to 0.05. There is no difference in mean test scores between junior and senior employees. Alternate hypothesis, p-value is greater than 0.05. There is a significant difference in mean test scores between junior and senior employees. And similarly, it is an interaction effect, training method into experience level. Null hypothesis is p-value less than equal to 0.05. That is, there is no interaction effect between training method and experience level. Training method I already mentioned as classroom versus online, and experience level is junior versus senior. Alternate hypothesis is p-value greater than 0.05. That is, there is significant interaction effect between training method and experience level. So null hypothesis and alternate hypothesis टू वे एनोवा में तीन बार डिफाइन करना होता है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए एंड तीसरा उनके इंटरेक्शन के लिए. So this is a very fundamental step.
नल हाइपोथेसिस को काफ़ी जगह एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को काफ़ी जगह एच वन या एच ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कुछ वैसा लिखा हुआ दिखे कहीं कि एच नॉट और एच वन और एच ए, देन ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो नल हाइपोथेसिस है एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। So let's come to the data. Here classroom, which is a factor A, and online factor A, which is a training method, and here junior and senior, which is a employee. Training method, classroom versus online, and experience level, junior versus senior. So in classroom and junior, student score 78 marks, whereas in classroom and when experience level is senior, student scores 85 marks. Similarly, these are the values. So these are the two uh, independent variables, which is training method and experience level, and marks of each student are the dependent variable in this case. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितनी भी रोज हैं, लाइक क्लासरूम एंड ऑनलाइन, जो अपना टीचिंग का मेथड है या ट्रेनिंग का मेथड है, उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। लाइक क्लासरूम में 3 रोज हैं, 78, 82 एंड 80 ये वैल्यूज हैं, यहाँ पे 85, 89, 87 है। सो ऑनलाइन में भी 3 रोज होनी चाहिए, तभी अनोवा काम करेगा, टू वे अनोवा। अगर ये रोज नंबर ऑफ रोज डिफर करेंगे दोनों में, तो टू वे अनोवा एप्लीकेबल नहीं होगा। मेक श्योर द नंबर ऑफ रोज आर सेम। ओके, सो ये टेबल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। इसको कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए अपने को डेटा टैब पे जाना है। यहाँ पे डेटा एनालिसिस ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ये डेटा एनालिसिस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देन आप फाइल पे जा सकते हो। यहाँ पे आप नीचे ऑप्शंस पे जा सकते हो। ऑप्शंस के बाद यहाँ पे एड-इन्स पे जाना है। एड-इन्स में ये एनालिसिस टूल पैक है, इसको क्लिक करना होगा एंड आप ओके पे क्लिक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। सो जस्ट गो टू द डेटा टैब एंड go to data analysis, choose ANOVA two factor with replication and click on OK. So इनपुट रेंज में यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है एंड पूरी ये रेंज सिलेक्ट करनी है। ये एंटायर रेंज सिलेक्ट करनी है, A1 से C7 तक, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। रोज पर सैंपल, ये जो मैं बोला था रोज शुड बी सेम। ट्रेनिंग मेथड क्लासरूम में भी 3 रोज है एंड ट्रेनिंग मेथड ऑनलाइन में भी 3 रोज है, तो दैट नंबर will come here as 3. It should be same, otherwise ये applicable नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लासरूम में 5 एंट्री होती और ऑनलाइन में 5 एंट्री होती तो यहाँ पे 5 आ जाता। अल्फा विच इज अ सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.05, जो स्टैंडर्ड लिए है। आउटपुट रेंज मैंने यहाँ पे चूज किया है ये वाला, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आप इस शीट पे भी ले सकते हो या न्यू वर्कबुक पे भी आप जा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, या न्यू वर्कबुक में जा सकते हो या न्यू वर्कशीट पे जा सकते हो। 3 ऑप्शन है, तो जनरली मैंने यहाँ पे आउटपुट रेंज सेम शीट पे ही ली हुई है। ओके, एंड आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जो मैंने अभी ऑलरेडी डेटा जनरेट किया है, ऐसे डेटा आपके पास जनरेट आ जाएगा। तो सिंपल 3 चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। इनपुट रेंज, जो भी आपका रेंज है वो आपको एंटायरली सिलेक्ट करना है। रोज पर सैंपल, जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं रोज में, 2 डिफरेंट कैटेगरीज में, वो आपको नंबर देना है। और आउटपुट रेंज आपको एक यहाँ पे सेल चूज करना है कोई भी, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जब आप ऐसा करोगे
उसके बाद आपके पास ये डेटा आ जाएगा। अनोवा टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन, यहाँ पे आपके पास समरी आ गई है। सो समरी में जूनियर है, सीनियर है, एंड यहाँ पे ये है क्लासरूम फैक्टर ए। ठीक है, तो क्लासरूम फैक्टर ए में काउंट कितना है, थ्री, थ्री वैल्यूज हैं अपने पास। सीनियर बी में भी अपने फैक्टर बी में सीनियर में अपने पास थ्री वैल्यूज हैं। इसका सम कितना है, 240, 78 प्लस 82 प्लस 80 इज इक्वल टू 240, और 85 प्लस 89 प्लस 87 इज इक्वल टू 261। यहाँ से इसका एवरेज निकल गया 240, बेसिकली 240 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 80, so mean is 80, and 261 divided by 3 is 87, so here mean is 87. Okay, यहाँ पे वेरिएंस निकला है। सिमिलरली ऑनलाइन जो फैक्टर ए है एंड सीनियर फैक्टर बी एंड सॉरी जूनियर फैक्टर बी एंड सीनियर फैक्टर बी की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। काउंट 3 है, सम 210 है, 70 प्लस 72 प्लस 68 इज इक्वल टू 210। एवरेज हो गया 210 डिवाइडेड बाय 3 विच इज मीन। यहाँ पे सम है 92 प्लस 95 प्लस 91 विच इज 278, 278 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 92.6666 विच इज द मीन, एंड यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। अब ये टोटल कैलकुलेट हो गया आपका। काउंट यहाँ पे कितना है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, सम यहाँ पे कितना है 240 प्लस 210 इज इक्वल टू 450, एंड मीन कितना है एवरेज विच इज इक्वल टू 80 प्लस 70 150 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका वेरिएंस आ गया और ये आपका सिमिलरली ये वाली वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट पार्ट के तरफ। यहाँ पे अनोवा सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये ऐसे तीन रोज आएंगे, सैंपल, कॉलम्स एंड इंटरेक्शन। तो सैंपल में अपने पास क्या है, ट्रेनिंग मेथड विच इज क्लासरूम और ऑनलाइन। कॉलम्स में गया एक्सपीरियंस लेवल विच इज जूनियर और सीनियर, and interaction is training method into experience level which is combination of both. So sum of squares की ये values आई हैं। degree of freedom 111 is 8, this is uh, ms value, this is f statistic, this is p value for these three, and this is f critical, and this is total of this, total of degree of freedom and total of sum of squares value. सो अपने को यहाँ पे p वैल्यू देखनी है कितनी है। ये फर्स्ट केस में p वैल्यू आई है 0.10, जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया था p वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05, तो 0.10 इज ग्रेटर देन 0.05। सेकंड केस में क्या है, 0.00000138 आई है, जो लेस देन इक्वल टू 0.05 है। थर्ड केस में 0.000150 आई है, जो लेस देन 0.05 है। सो फर्स्ट केस में अपनी p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आई है, बाकी दोनों केसेस में लेस देन 0.05 आई है। सो इससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेनिंग मेथड सैंपल रो, this one training method sample row, first this one is p value is 0.10037 or roughly 10%. Significance check, since 0.10 is greater than 0.05, this effect is not statistically significant. Null hypothesis क्या था, अगर p value less than equal to 0.05 है तो it is significant, otherwise it is not significant.
meaning taken as a whole across all employees, changing from classroom to online training did not create a major difference in the test scores. So here we reject the null hypothesis because p-value is greater than 0.05. There is a significant difference in mean There is a significant difference in mean test scores between the classroom and the online training methods. So here we rejected the null hypothesis. Second one is experience level columns. इसको different color से highlight कर देते हैं. P value is 1.38e-06. जब भी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी e-06, consider this as a 10 to the power minus 6. अगर ये डैश के आगे 0.8 होता then it should be 10 to the power minus 8. So the value is 1.38 into 10 to the power minus 6, which means 0.0000138. Significance check. This is a way lower than 0.05, making it highly significant. So here we fail to reject the null hypothesis, meaning experience is a massive factor. Senior employees score significantly higher overall, 89.83 average compared to junior employees, 75 average. The interaction effect, which is combination of training method and experience here. We only have to check the p value as of now. P value is 0.00015. This is much lower than 0.05, making it highly significant. So here we fail to reject the null hypothesis, meaning there is a powerful interaction. This tells us that the training methods do not work the same way for everyone. Juniors did significantly better in classroom, 80 average, than online, 70 average. Seniors did significantly better in online, 92.6 average, than in the classroom, 87 average. So ये वैल्यू मैं कहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ? 80 and 70 जूनियर्स और क्लासरूम ऑनलाइन की शीट 2 से. जूनियर्स ने कितना स्कोर किया है? 80 and 87 and 70 and 92.66. So सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है. Junior did significantly better in classroom in comparison to online. क्लासरूम में जूनियर का एवरेज कितना है? 80 and online में एवरेज कितना है? 70. So junior performed well in online in classroom comparison to online, and senior का एवरेज कितना है? 87 classroom में and online में एवरेज है 92.66. So senior performed better in online in comparison to classroom. सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखी है. ठीक है, 92.67 and 87. सो इसके बाद अपने को फिगर आउट क्या होता है यहाँ पे करने के बाद. Data proofs via two-way ANOVA is so valuable. If you had only looked at the training method alone, you would have seen a non-significant p-value 0.10 and wrongly concluded online training does not make a difference. अगर मैं सिर्फ ट्रेनिंग मेथड को देखता यहाँ पे
और यहाँ पे वैल्यू 0.10 है. सो मैं कंक्लूड क्या करता, ऑनलाइन ट्रेनिंग डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज you looked at the interaction in table this training method into experience. You uncovered the real story. Online training is highly effective for seniors but hurts the performance of juniors. So this is our conclusion after having the interaction check. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा. मैंने टू वे अनोवा में क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी यहाँ पे. फर्स्ट इज what is ANOVA? ANOVA, what is the core concept? What scenario I took? Okay, so these are the three null hypothesis and alternative hypothesis. It is a classic approach. You can't change anything in that. So you have to take three null and alternate hypothesis. Then you have to go to the data. Go to the data tab. Go to data analysis. Choose uh, two-factor ANOVA with replication. Click on OK, then table will come. Then select the table, the number of rows, and where you want the output. So this value will come to you. यहाँ पे अपनी p वैल्यू आ जाएंगी. इसको अपने को कंपेयर करना है नल हाइपोथेसिस की वैल्यू से. ये यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन आ गया तीनों का इंडिविजुअल, और ये फाइनली कंक्लूजन आ गया. मैंने अनोवा वन वे अनोवा पे भी वीडियो बनाई है फॉलोड बाय टर्की टेस्ट. उसका मैं लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाकर देख सकते हो. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. मैं और भी स्टेटिस्टिक्स के टेस्ट कवर करूंगा, प्लस मैं सप्लाई चेन की वीडियोस कवर कर रहा हूँ एंड एक्सेल के और भी फार्मूलाज कवर कर रहा हूँ, प्लस मैं वोकेबलरी भी कवर कर रहा हूँ. सो अगर आप इनमें से कोई भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. थैंक यू.